Hello, good morning, girls. And today we discuss about the wage legislation. आज हम wage legislation के बारे में डिस्कस करेंगे. Government has exacted legislature to measure and protect the wage earners' rights and to emphasize managerial obligations in this regard. The legislation only set the floor below and which rates and obligations cannot fall. Nothing prevents more liberal terms being negotiated through collective bargaining process. Wherever they exist, and this may briefly be considered the main philosophy of three pieces of wage legislation. Wage legislation जो है उससे संबंधित जो पॉलिसीज बनी और एक्ट्स बने, तो सबसे पहला जो बना एक्ट वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 में. दिस एक्ट वाज द फर्स्ट सोशल सिक्योरिटी स्टैट्यूटरी measures which requires the employer to pay compensations to the workers for disablement, temporary or partial, for a period exceeding 3 days and death. जो पहला हमारा कंपनसेशन एक्ट बना वो 1923 में बना, जिसमें कि फर्स्ट टाइम सोशल सिक्योरिटी स्टैट्यूटरी मेजर्स को अडॉप्ट किया गया, जिसमें कि एम्प्लॉयर के लिए ये कहा गया है कि जो अगर वर्कर्स का डिसेबलमेंट हो जाता है, टेम्परेरी या पार्शल हो जाता है, और जिसका कि पीरियड जो है 3 डेज से अधिक ना हो. कंपनसेशन इज आल्सो पेबल फॉर सर्टेन occupational diseases. The act applies to workers whose monthly wage rupees 1000 and who are employed as a regular workers in factories. दूसरी बात आती है कि ये जो एक्ट लागू होगा वो उन वर्कर्स के ऊपर लागू होगा जिनकी मंथली वेजेस जो है वो 1000 रुपए हैं. दूसरी बात आती है कि जो रेगुलर वर्कर्स हों फैक्ट्री में, उनके लिए फैक्ट्रीज में, माइंस में, प्लांटेशंस में, ट्रांसपोर्ट में, कंस्ट्रक्शन वर्क में, रेलवेज में एंड सर्टेन स्पेसिफाइड हैजार्डस ऑक्यूपेशंस में, उन सब के लिए ये लागू होगा. एंड शेड्यूल 2 mentions the list of the persons who are covered under the act. The state governments are empowered to extend the scope of the act to any class of persons whose occupations are considered hazardous, and some states have extended the act to other sectors of the employment. A series of amendments to the act has increased the scope, title, to and amount of compensation, classes of dependents entitled to benefit, and also the number of scheduled occupations diseases. The enforcement of the act is entrusted to the workmen's compensation commissioners, who are given wide powers regarding the settlement of the claims to compensation and the allocation of compensations to dependents. The award of compensation of the commissioners are generally accepted, although the aggrieved parties are give the right of appeal in the High Court, and which is however restricted to a question of law. The amount of compensation depends on the nature of the injury and the average monthly wage of the workers concerned. In the case of the death, total permanent,
partial permanent, and temporary disabled, the employees is compensated according to the schedules of the Act, where the employee's state insurance scheme is applicable. The liability of the employer under this Act is transferred to the ESI Corporation. Another act was passed, the Payment of Wages Act 1936, और उसके बाद में फिर द मिनिमम वेज एक्ट 1948 पास किया गया, और फिर उसके बाद में जो पास किया गया द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ये तीन और एक्ट्स इसी संबंध वेज लेजिस्लेशन से संबंधित हैं, जिनको कि हम डिस्कस करेंगे नाउ। ओके गर्ल्स।